Welcome back to my channel. This video would be in Hindi and English both. क्योंकि मैं हिंदी में करने वाला हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास हिंदी में आए थे, मेल्स आए थे, उनको एक्चुअली रिप्लाई देने के लिए मुझे हिंदी में भी करना है और मैं चाहता हूँ कि ये सब देखें, जो जिनको भी हिंदी समझ में आता है वो देख लें कि मैं खुद प्रेडिक्शन कैसे करता हूँ। तो ये वीडियो स्किप मत कीजिए, जैसे कि हो सकता है कि आप देख रहे हो क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन है ये, बट आप सिर्फ अपना देखो और निकल जाओ, तो वो एस्ट्रोलॉजी का मतलब यूज़ ठीक से नहीं हुआ। हो सकता है मैं आपका क्वेश्चन किसी और के थ्रू में बता रहा हूँ, तो ट्राई टू लर्न फ्रॉम इट। और मैं इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके एक बार बोलूँगा, सो दैट माई इंग्लिश व्यूअर्स आर ऑल्सो सेटिस्फाइड एंड दे कैन अंडरस्टैंड एंड लर्न फ्रॉम इट। तो शुरुआत करते हैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करके, जो मेरे साथ आज ही हुआ सुबह। मैं जहाँ पे रहता हूँ, ये मेरा घर है, और मेरे बगल में जो मेरे पड़ोसी रहते हैं उनका एक छोटा सा बेबी है, ठीक है। तो आज सुबह वो जो बेबी बात होता है वो एक्चुअली उनको बेबियों को क्या होता है, जनरली नहलाना पड़ता है। तो सुबह मेरे कान में आया कि बहुत रो रहा है बच्चा। तो मैंने सोचा क्यों, फिर मैंने देखा जाके कि उसकी मम्मी उसको नहला रही थी, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा ठंड भी पड़ने लगा है, तो ऐसा है उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। ऑब्वियसली सर्दी में सबको थोड़ा बहुत नहाने का तकलीफ होता है, तो बच्चे को तो होगा ही, तो ऑब्वियसली उसको अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो रो रहा है चीख चीख के, बट मम्मी उसको नहला रही है। एक सिंपल सा एक सीन, छोटा सा सीन मैंने देखा। तो फिर मैं वापस आके बैठा, अपना काम करने लगा, और अचानक से मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, तो मैं वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आप ही मेरे दोस्त हो, ठीक है। तो आप देखिए, जब कोई भी पेन होता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है लाइफ में, तो सोचिए आई हैव बीन गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रबल्स, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत चल रहा है ये वो, और हम भगवान को दोष दे रहे हैं, अरे आप ये कर रहे हो मेरे साथ, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं तो आपको इतना मानता हूँ, क्यों आप मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हो। होता है ना कि हम लोग सोचते हैं। तो यही ख्याल मेरे दिमाग में अचानक से आया कि अगर मैं भगवान को अपने मम्मी के जगह पे बिठाऊं और मैं एक बच्चा हूँ उनके सामने, तो वो मुझे एक्चुअली नहला रहे। ये नहाना जो है वो एक्चुअली प्यूरिफिकेशन है। अब माँ ही जानते हैं कि बच्चे को नहलाना चाहिए, नहीं तो जर्म इफेक्ट करेगा, वायरस आ सकता है, गंदा हो सकता है। तो ठंड लग रहा है, बच्चे को कष्ट हो रहा है, बट अल्टीमेटली मम्मी को पता है वो क्यों कर रही है, राइट। सो व्हाई डोंट वी थिंक लाइक दैट। तो ये बहुत अच्छा ख्याल आया मेरे दिमाग में अचानक से, पता नहीं कहाँ से। तो हो सकता है जब हमको पेन आ रहा है ना, उतना प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो हमको सोचना चाहिए कि हो सकता है कि मेरा भी कुछ प्यूरिफिकेशन हो रहा है अंदर से, राइट। तो भगवान को पता है ना कि क्यों कर रहे हैं वो मेरे साथ ऐसा। आत्मा शुद्धि भी एक वर्ड होता है, वो बहुत बड़ा वर्ड है, बट मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। ये जो आज मेरे साथ हुआ, आप थोड़ा सोच के देखिएगा कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हम लोग बोलते हैं ये तो प्रॉब्लम, बट हम लोग उसको देख नहीं सकते, उसको फील नहीं कर सकते। हमको लगता है ये प्रॉब्लम है, जैसे बच्चे को लगता है उसको ठंडा लग रहा है, वो प्रॉब्लम है, क्यों पानी से नहला रहे हो यार। बट मम्मी को पता है क्यों उसको नहलाना ज़रूरी है। दोस्तों हम सबको पता है राज पूर्णिमा आने वाला है इन दिस 29th ओनली। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उस दिन रात को मतलब शाम के बाद उस दिन पूर्णिमा में मून लाइट में आप अपना अगर आपको इष्ट मंत्र मिला है तो आप जप करें। अगर आपको कोई इष्ट मंत्र नहीं मिला है अभी तक, या आपने दीक्षा नहीं लिया है, तो आप श्री कृष्ण नाम करें या ओम नमः शिवाय करें। कृष्ण नाम करें तो और अच्छा है उस दिन, राज पूर्णिमा के दिन। तो उस दिन शाम के वक्त मून लाइट में अगर करें तो बहुत अच्छा फल देता है। और दोस्तों कोई कोई तिथि या कोई कोई दिन ऐसा होता है जब जप करने से और कृष्ण नाम या कोई भी आप भगवान को मानते हो उनका नाम लेने से उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फल प्राप्त होता है। सो दैट्स अ वेरी ऑस्पिशियस डे, राज पूर्णिमा, वी ऑल नो दैट, क्योंकि उस दिन सूर्य और चंद्र समसप्तम में विराज करते हैं, और
इसको आप एस्ट्रोलॉजिकली भी देख सकते हो, जैसे कि चंद्रमा हम जानते हैं कि वृषभ में एग्जॉल्टेड है, राइट। वृषभ यानी नंबर 2 टॉरस, और मार्स के घर में सन रहते हैं नंबर 8 यानी वृश्चिक में, तो समसप्तम में रहते हैं, 1-7 कनेक्शन होता है, और उस दिन चंद्रमा का इफेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका बहुत सारा एक्सप्लेनेशन भी है, तो आप ये करके देखिए। उस टाइम पे कृष्ण नाम कीजिए या अपना जप कीजिए, मून लाइट में कीजिए, दैट वुड बी वेरी वेरी इफेक्टिव। तो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, एंड डोंट स्किप, try to learn some predictive techniques, and maybe you can predict about yourself only. So let's start. So friends, let's start with a shloka of Srimad Bhagavad Gita. Adhishtanam tatha karta karanam cha prithagvidham vividasya prithak cheshta daivam chaivatra panchamam. So if I have to explain it, then I should interpret it in this in modern terms, and let me mention Mr. Rao, the great guru Mr. Rao's explanation mentioned on the book named Karma and Rebirth. So he explained that, interpreted in modern times, say in the language of management, there are, in the implementation of any plan or project, 5 components. A plan of action is the first one, a plan manager the second one, instruments of action the third one, the act of implementation the fourth one. Now, but the final outcome of this, either success or failure, because it is dependent on the fifth factor, which is destiny. तो दोस्तों, इसको अगर मैं हिंदी में बताना चाहूँ तो ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि आप सिंपली सोचिए कि आप सुबह निकले, आपका कोई प्लान है, ठीक है, कि एक जगह पे आप जाओगे और ये काम आप करोगे। सपोज कोई दुकान में आपको जाना है, कुछ सामान खरीद के वापस आना है, तो आप तैयार हो गए, सब कुछ ले लिए, बैग कलेक्ट किए, पैसा ले लिए, एटीएम से पैसा उठाए और वहां पे बस पकड़े और उस पर्टिकुलर दुकान में चले गए, ठीक है। बट कोई स्ट्राइक नहीं है, कुछ नहीं है, बट जाके आप देखते हो कुछ कारण से वो दुकान बंद है, और ऐसा चीज है जो आसपास उसी दुकान में मिलता है और कहीं पे नहीं मिलता है। सो एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने दिया। तो वो जो दुकान खुला रहेगा या बंद रहेगा, वो कौन डिसाइड करेगा? दैट इज डेस्टिनी, और वो श्री कृष्णा डिसाइड करते हैं, यानी कि भगवान डिसाइड करते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैंने एक हॉरोस्कोप लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन था मिस्टर हेमंत से, नेचर ऑफ स्पाउस। दोस्तों मुझे पता नहीं कि रीजन क्या है, बट बहुत सारा मेरे पास जो क्वेश्चन है वो स्पाउस रिलेटेड है, ठीक है। तो मैं कुछ एक्सप्लेन करूंगा, बट नेक्स्ट टाइम से ऐसे मैं ओवरऑल एक जनरल वीडियो बनाने वाला हूँ, नेचर ऑफ स्पाउस या प्रोफेशन ऑफ स्पाउस, ये सब लेके आप देख लेना, क्योंकि एक ही चीज बार बार मैं सबका चार्ट देख के नहीं बोल सकता। बट स्टिल लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेमंत चार्ट। एज यू कैन सी, ये हेमंत का चार्ट है। नाउ नेचर ऑफ स्पाउस, तो इन नाड़ी एस्ट्रोलॉजी वी सी वीनस एज द स्पाउस। वीनस इज द स्पाउस इंडिकेटर, यानी शुक्र को हम वाइफ का इंडिकेटर जो है प्लैनेट, वो पकड़ते हैं। तो नाउ आई कैन सी द 7th हाउस में शुक्र खुद के घर में बैठे हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ से हम देख सकते हैं कि मार्स इज एस्पेक्टिंग फ्रॉम 12th, मार्स इज रेट्रोग्रेड, एंड no one else is aspecting. If we take Ketu's aspect, then it's a 5th aspect of Ketu, but we should not consider it. तो उस हिसाब से मैं सीधा सीधा ये बोल सकता हूँ कि वाइफ वुड बी गुड लुकिंग एंड वाइफ वुड बी टेकिंग केयर ऑफ द हस्बैंड। तो इस बात का तो टेंशन है ही नहीं।
तो फिर भी कंफर्मेशन के लिए हम D9 देख लेते हैं, नवांशा। तो नवांशा में ये चीज कंफर्म होता है। सो कोई भी चीज हम नवांशा में अगर देखते हैं और वो चार्ट में सेम काइंड ऑफ पोजीशन दिखाता है तो वो कंफर्म करता है वो सिचुएशन। और ये आप देख रहे हैं कि D9 पे 7th हाउस में वीनस फिर से यहाँ पे बैठा है और वो अभी बुध के घर में बैठा है। और एक मजेदार चीज यहाँ पे ये हो गया, बुध बैठा है शुक्र के घर में, नंबर 7, यू कैन सी 11th हाउस जो है लिब्रा, वहां पे मार्करी बैठा है। सो ये एक 7 और 11 का एक्सचेंज हो गया। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि स्पाउस जो होगा वो बहुत लकी होगा इनके लिए, ठीक है। और ये जो एक्सचेंज है ये शादी के बाद अपना एक्शन दिखाना स्टार्ट करेगा धीरे धीरे, ओके। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है नेचर ऑफ स्पाउस, इंटेलिजेंट, गुड लुकिंग एंड केयरिंग। हाँ, और एक पॉइंट आप जो देख रहे हैं यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, ये मैंने एनालिसिस करके रखा था तो फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सम प्रॉब्लम ड्यू टू अ थर्ड पार्टी, दिस पर्सन कैन बी अ फॉरेनर ऑल्सो, ओके। तो ये मैं कहाँ से बताया, आप देखिए यहाँ पे जो बर्थ चार्ट है इनका, वहां से मैं देख रहा हूँ कि नॉर्मल चार्ट में आप आ जाइए तो 12th हाउस में मार्स बैठा है। 12th लॉर्ड कौन है? शुक्र खुद है। वो 7th एंड 12th बोथ लॉर्डशिप रखता है इस हॉरोस्कोप में। तो 12th से मार्स अगर अपना 8th दृष्टि जो है, 8th एस्पेक्ट जो है वो डालेगा, इट वुड बी ऑन द 7th हाउस, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंडिकेशन है और बहुत सारा कनेक्शन है जो यहाँ पे कंफर्म करता है एक ही चीज, और वो भी रेट्रोग्रेड मार्स है, ओके। कि शादी के बाद आप देखोगे कि कुछ थर्ड पार्टी से इशू होने वाला है, हो सकता है, और उसके चलते देयर वुड बी a good discipline, okay. There would be a very good discipline which you guys need to maintain after marriage. तो ये आपको वो सिखा के जाएगा। तो मार्स का जो स्पेशल एस्पेक्ट है दोस्तों, मैं स्पेशल एस्पेक्ट लेके वीडियो बनाने वाला हूँ कि मार्स, जुपिटर और सैटर्न का स्पेशल एस्पेक्ट जो है वो क्या काम करता है, हमको क्या बताता है। मार्स का जो 8th एस्पेक्ट है वो एक्चुअली कुछ चीजों को डिस्ट्रॉय करता है ताकि हम वहां पे डिसिप्लिन ला पाए, ओके। तो ये आप ट्राई करके देख लेना, ये मैं बनाऊंगा एक वीडियो, तब मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। So in English, if I have to explain again, Mars is aspecting from the 12th house, and it is indicating, and Mars is retrograde, and it's in the house of the Venus, who actually is the lord of 12th and 7th house, and Mars is giving its 8th aspect on Venus, and it's a special aspect, and it would teach the couple to have some discipline in their marriage life, okay. So okay, that's it for this horoscope. Next, Sukanya Sana, so she asked about the date of marriage. So let's see her horoscope. Now the timing of marriage, it would be, I have written here the day, the time of marriage would be within 1st May 2024 to 18th of October 2025. Now I'll not explain this much because if you have to learn, then you can look for the video of marriage timing, which is there on in Hindi and English both in the playlists. So have a look at it. तो मैं सिर्फ एक बार समझा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये बर्थ चार्ट में आप देख सकते हो कि जुपिटर अभी ट्रांजिट का जुपिटर जो है वो कहाँ पे है। नाउ जुपिटर इज पोजिशन इन कैप्रिकॉर्न इन ट्रांजिट, ओके। नाउ इफ जुपिटर इज एस्पेक्टिंग मार्स, दैट इज फाइन, बट द मैरिज कैन नॉट हैपन on within this 6 months. The reason is यहाँ पे जो है I can see Jupiter currently in Capricorn with Saturn. तो यहाँ पे Saturn is the third lord, okay. From Lagna
सैटर्न इज द थर्ड लॉर्ड, तो थर्ड लॉर्ड कुछ बाधाएं क्रिएट करेगा, तो डेफिनेटली मैरिज अभी नहीं होगा, उसका चांस भी नहीं है। देन मैरिज का मैंने इतना बड़ा पीरियड क्यों रखा है यहाँ पे, 1 मई 2024 टू 18 अक्टूबर 2025, इसको मैं शॉर्ट कर सकता था अगर मैं दशा देखना चाहता तो, बट दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने ओवरऑल एक आइडिया दे दिया है सिर्फ ट्रांजिट और नाड़ी का एक कॉन्सेप्ट लगा के। और D9 में भी आप देखो तो सेम चीज इंडिकेट करता है, और विच इज अगेन 24 to 25। तो मैं और डिटेल में इसको तोड़ सकता था और शॉर्ट टाइमिंग दे सकता था, बट मैं उतना डिटेल में जाना नहीं चाहता अभी। तो धीरे धीरे मैं जब वीडियोस बनाता चला जाऊंगा तो आप खुद मैच कर पाओगे, ठीक है। बट ओवरऑल इट्स अ स्पेशल हॉरोस्कोप। तो मैंने ये अलग से मेंशन क्यों किया, ये बहुत स्पेशल हॉरोस्कोप है क्योंकि मैं ये बहुत अच्छे से देखा। ये डेट ऑफ मैरिज से बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीजें यहाँ पे हम देख सकते हैं। डेट ऑफ मैरिज तो ठीक है, जो फिक्स है वो होगा, मैरिज होगा, ठीक है, तो अभी उससे कोई टेंशन नहीं है। बट यहाँ पे बहुत सारा चीज जो है हम बता सकते हैं इस हॉरोस्कोप से। तो ये देखिए, आप अगर ये सुन रहे हो तो ये आप इससे भी आप कुछ सीख सकते हो, या तो ये आपका हॉरोस्कोप है या नहीं है, किसी का भी हो, बट जो मैं बता रहा हूँ ट्राई टू लर्न फ्रॉम इट। तो ये मेरा प्रेडिक्शन का थोड़ा मैं जो टाइप है वो मैं आपको शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो द लग्ना लॉर्ड इज जुपिटर विच इज इन द 4th हाउस। तो ये जो नेटिव है, ये जो जातिका है यानी सुकन्या, शी एक्चुअली cares for her house, okay, and for her mother, first point. Now जुपिटर 4th हाउस में बैठा है और वो भी मीन राशि में, ओके, स्पाइसीज में। सो दैट इज अ साइन ऑफ मोक्षा, दैट इज फाइन। सो आई एम नॉट सेइंग दैट कि संन्यास योग है या कुछ है। सो आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन संन्यास योग और समथिंग, बट दैट वुड बी लेटर। बट यहाँ पे आप ठीक से अगर देखो, 7th हाउस जो है, 7th हाउस में सन एंड मर्करी एस्पेक्ट कर रहे हैं लग्ना को, ठीक है। और मैं कुछ कनेक्शन अगर यहाँ पे देखना चाहता हूँ तो आप देखिए, जुपिटर जो है वो सैटर्न एंड केतु के बीच में बैठा है, ठीक है। तो केतु जुपिटर सैटर्न जब एक साथ मतलब बैक टू बैक घर में बैठ गए, और बीच में आप देखेंगे कोई और प्लैनेट है ही नहीं, ओके, दैट इज स्पेशल। और ये आप देखो कि यहाँ पे कोई, ये तीनों घर पे 1, 12 एंड 11 पे कोई एस्पेक्ट भी नहीं दे रहा है राहु का छोड़ के, ठीक है। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं शी विल बी वेरी स्पिरिचुअल, इतना हम इजीली बता सकते हैं इससे। और एक चीज बता सकते हैं, ये इन्होंने खुद मेंशन भी किया है दैट शी हैज मेनी एनिमीज, व्हाई, द क्वेश्चन इज व्हाई। तो मैंने एक वीडियो भी बनाया है विपरीत राजयोग, तो प्लीज वॉच दैट वीडियो, इट्स अवेलेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश। So in this case, if you see, 6th house lord is Venus. 6th house lord is Venus, which is sitting on the 6th house, ठीक है, and with the 12th house lord. 12th house lord is Mars. Now on 8th house, Moon is sitting in the 8th house, and which is Moon's own house. Okay, again, 3 Viparit Raj Yogas can be seen in this particular horoscope at the same time. Okay, तो यहाँ से हम easily बता सकते हैं कि इनका शत्रु तो होगा बट शत्रु कुछ कर नहीं पाएंगे, सिंपल। So there would be enemies, but it can even it can do good for her, cause they cannot harm her because it's a Viparit Raj Yoga in the horoscope. Initial problems will be there, but not necessary that it's a big issue or big problem. ये तो आते जाते रहते हैं, ठीक है। तो एनिमीज रहेंगे बट यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट।
तो यही चीज मैंने नवांशा में भी देखा, तो वो कंफर्म कर रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया था पिछले हॉरोस्कोप में कैसे नवांशा में कंफर्म करता है कोई भी चीज। यहाँ पे देखिए 6th हाउस में शुक्र खुद के घर में बैठा है मंगल को लेके, जो 12th हाउस लॉर्ड है। यहाँ पे भी आप देखिए शुक्र बैठा है 6th हाउस में, विच इज एग्जॉल्टेड, और वो मार्स वो 12th हाउस से वो देख रहा है। आप देख रहे हैं कनेक्शन। यहाँ पे 12th हाउस लॉर्ड मार्स था जो शुक्र के साथ बैठा है, जो 6th हाउस लॉर्ड है। यहाँ पे आप देखिए शुक्र जो खुद 8th हाउस का लॉर्ड है और लग्ना लॉर्ड है नवांशा में, वो 6th हाउस में चला गया शत्रु के घर में, और मार्स जो है वो देख रहा है डायरेक्टली वेनस को अगेन फ्रॉम 12th हाउस। ठीक है, तो ये एक स्पेशल विपरीत राजयोग क्रिएट करता है। और यहाँ पे वीनस एग्जॉल्टेड है, 8th हाउस लॉर्ड एंड लग्ना लॉर्ड इज एग्जॉल्टेड इन 6th हाउस। ठीक है, तो ये चीज कंफर्म करता है। नेक्स्ट, गली Nagaraja again, marriage time, but the problem is he hasn't confirmed the timing. He said it would be within 4 to 6. So I have considered it as 5 p.m. And as we do not fix the lagna, I will try to give the explanation on Nadi transit only. Okay, so the timing of marriage, it would be May 2025 to October 2026. Okay, depending on the situation, Jupiter's transit and Venus transit. So I have checked this. So 2025 to 2026, May 2025 to October 2026 ट्रांजिट मैंने चेक किया था। अच्छा, सो नेक्स्ट, नेचर ऑफ स्पाउस, सेम क्वेश्चन इन्होंने भी किया था, तो मैंने सीधा सीधा लिखा है डोमिनेटिंग एंड इंटेलिजेंट। नाउ यू कैन आस्क व्हाई dominating but intelligent also. Why dominating? Sitting with Mars, simply the wife is dominating, we can say that, because Mars and Venus both are on the 7th house only. Okay, so Mars is the husband indicator, but in this case not a husband indicator because it's a male chart, and Venus is the wife indicator, but Venus while sitting with Mars, it can show aggressiveness. ओके, और ये सीधा सीधा लग्न को भी देख रहा है, तो ये और भी कंफर्म करता है उस चीज को। वाइफ वुड बी एग्रेसिव एंड डोमिनेटिंग बट इंटेलिजेंट ऑल्सो। ओके, तो यू डोंट नीड टू वरी। वाई इंटेलिजेंट? सिटिंग इन द हाउस ऑफ Mercury and following Mercury and Sun both. Overall the chart is good. So एंड वन मोर थिंग आई हैव मेंशनड हियर, क्योंकि मैंने उनका चार्ट चेक किया था, तो मेरे यहाँ पे दशा जो निकला मैं उस हिसाब से देखा, और ट्रांजिट में भी चेक किया। देयर वुड बी बिग इवेंट्स इन हिज लाइफ विद इन September 2026 टू September 2029। ये स्पेसिफिकली मैंने मेंशन कर दिया इसलिए। सो बिग इवेंट्स कैन बी एनीथिंग, कैन बी गुड, कैन बी बैड, कैन बी मिक्स्ड, so that I will discuss later. Okay, next, Anup Yadav again, nature of spouse, marriage time. Okay, so now I am fed up of this question. Okay, so I am giving a short answer. Marriage time would be between April 13 2022 to April 21 2023. Wife would be supportive, good looking and lucky, but will spend money. So why I said this? Okay, see, 7th house has Mars on the birth chart. Okay, Venus sitting on the on 3rd house. Okay, 12th lord Jupiter is aspecting Venus directly, so there would be improvement. Okay, after marriage I have made a video on this, do watch it. So there will be improvement, monetary improvement after marriage, but wife will be wife would love to spend money. Okay, it happens if you have money, so it's okay. Now why I said this? Okay, one more thing, she will be good looking and she will be lucky for you. In Navamsha, if you see again, the 7th house lord Sun is on
sitting on the 12th house. So that's how we should see. क्यों हम ये देख रहे हैं? See, यहाँ पे 12th हाउस जो है वो खर्चे का आता है. आप देखिए नवांशा कोई भी चीज को कंफर्म करता है. आप ये नॉर्मल बर्थ चार्ट में अगर देख रहे हो सिंपली 12th हाउस लॉर्ड का एस्पेक्ट डायरेक्टली वीनस पे पड़ रहा है और यहाँ पे भी आप देख रहे हो 7th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा है. तो उस हिसाब से ये हम बोल सकते हैं दोनों को क्लब करके एक साथ मिला के कंबाइन करके कि ये वाइफ जो हो जो भी होगी वो she will be beautiful, she will be good looking, she will be lucky for you, she will be very supportive, but at the same time she will spend money. Okay, chalo. Next, Utsav Pal, and his question was on job timing and type of job, whether it would be service or business. Okay. So in this case, Utsav Paul, তো আমি লিখে রেখেছি জব টাইপ অ্যাকচুয়ালি বোথ এখানে শো করছে. হি অ্যাকচুয়ালি asked me questions in Bengali, but I think he will understand Hindi and English both, so I'll try to explain in Hindi and English only. Okay, उत्सव आपका जो चार्ट है वो भी एक स्पेशल चार्ट है. तो सबसे पहले यही पॉइंट मैं मेंशन करना चाहूंगा. In 10th house, the house of karma, there are 3 planets, Sun, Mercury and Venus. Now, Sun is sitting in the house of Moon and Moon is sitting in the house of Sun, so there would be an exchange. तो यहाँ पे आप देखिए 4th house lord is sitting on the 5th house. यहाँ पे 4th house, 10th house lord sitting in the 11th house. Why? 10th हाउस लॉर्ड इज मून, यानी चंद्रमा. यहाँ पे आप देखोगे तो कर्क राशि का चंद्रमा जाके सूर्य के घर में बैठ गया जो 11th लॉर्ड है, और 11th लॉर्ड जो है सूर्य वो आके 10th हाउस में 10वें घर में बैठ गया. सो देयर वुड बी एन एक्सचेंज एंड अ गुड एक्सचेंज. नाउ व्हाई ए गुड एक्सचेंज? देखिए चंद्रमा के घर में जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में ये एक्सचेंज होता है तो बहुत अच्छा होता है और वो बाद में इफेक्ट देना स्टार्ट करता है. और यहाँ पे आप देखोगे तो मरकरी जो है वो डेबिलिटेटेड है, मून के घर में बैठा है मरकरी, बुध डेबिलिटेटेड है, बट वीनस साथ में है. ओके, और मून जो है वो एक्सचेंज में यहाँ पे आ रहा है. ठीक है, नाउ यहाँ पे अगर मैं 10th हाउस जो देख रहा हूं वो स्ट्रॉन्ग ही देख रहा हूं. लग्ना लॉर्ड जो है वो वीनस है, वो आके 10th हाउस में बैठ गया. सबसे पहले मार्करी जो 12th हाउस और 9th हाउस का लॉर्ड है वो भी आके 10th हाउस में बैठ गया. तो सर आप जो भी करोगे इसमें फॉरेन इन्वॉल्वमेंट होगा. नंबर 1, फॉरेन इन्वॉल्वमेंट होगा ही. ठीक है, इनकम फ्रॉम फॉरेन और फॉरेन से रिलेटेड चीज लेके आप कुछ भी कर सकते हो. नाउ यू हैव चांसेस ऑफ बोथ बिजनेस एंड सर्विस. ये मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो जब भी आएंगे प्रोफेशन के ऊपर, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा. बट आपको स्टार्ट करना पड़ेगा जीरो से. ठीक है, मरकरी डेबिलिटेटेड है तो डेबिलिटेटेड प्लैनेट से डरने वाली कुछ बात नहीं है. वो दिखाता है कि वो स्पेशल है, वो दिखाता है कि आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा कुछ भी आप करो. और भैया एक ही चीज मैं बताऊंगा, वो नोट करके रख लो. रेट्रोग्रेड जुपिटर वीडियो तो आपने देख ही लिया है और मैं उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, आप जानते हो आपको क्या करना है. नेक्स्ट, आप कुछ भी काम करोगे, मैं ये बोल के रखता हूँ पहले से, उसमें कंप्यूटर का इन्वॉल्वमेंट होना ही होना है. ठीक है, अब कंप्यूटर को लेके कुछ ना कुछ करोगे, वो बिजनेस करो या जॉब में आप करो, वो कर सकते हो, बट कंप्यूटर इन्वॉल्व होगा उसमें. ठीक है, आप ये मैच कर लेना. और जिसको मैं जो भी बोल रहा हूँ यहाँ पे काइंडली आप अपना फीडबैक यहाँ पे दे सकते हो वीडियो के कमेंट सेक्शन में. और मैंने D10 जो है और एक डिविजनल चार्ट जो प्रोफेशन के लिए देखा जाता है वो दशांशा है, वहां पे भी मैंने चेक किया. 10th हाउस लॉर्ड इज सिटिंग ऑन द 7th हाउस. 7th हाउस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज फॉरेन बिकॉज इट इज जस्ट ऑपोजिट द लग्न.
और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ थर्ड हाउस लॉर्ड अगेन 12th में बैठा है एंड 8th एंड 11th लॉर्ड इज एस्पेक्टिंग द 12th हाउस। तो ये सब मैं और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट अकॉर्डिंग टू मी कंप्यूटर रिलेटेड कुछ भी जॉब होगा आपका वो आप कर सकते हो, और आप कभी ना कभी दोनों में ही इन्वॉल्व हो जाओगे, यानी जॉब और बिजनेस आपको दोनों ही करना पड़ेगा। और मैंने यहाँ पे ये लिख भी दिया है, विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो बट विल डू वेरी गुड आफ्टर इनिशियल स्ट्रगल, कंप्यूटर मस्ट बी इन्वॉल्व। और जॉब टाइमिंग मैंने आपको बता भी दिया है, ऑलरेडी स्टार्टेड, वो आप वीडियो में देख चुके हो शायद। आप थोड़ा एक मंथ यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, स्पेशल मंथ फॉर योर जॉब इज दिसंबर 2020। तो ये मेरा एक सजेशन है, आप दिसंबर 2020 में मतलब नेक्स्ट मंथ में आप ट्राई करो अच्छे से, या अभी से ट्राई करो, वो नेक्स्ट मंथ में हो सकता है। और या तो आपको मिल गया है जॉब, वो नेक्स्ट मंथ से आप स्टार्ट करोगे, या तो आप कुछ बिजनेस प्लान कर रहे हो तो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करोगे, ऐसा भी हो सकता है। दिसंबर 2020 एक ऐसा मंथ है जो विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड, गुड फॉर यू। ये मैंने क्यों कहा वो अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बिकॉज बहुत सारा जवाब देना है। धीरे धीरे मैं सब वीडियो लाऊंगा, हो सकता है मैं ये चार्ट उठा के फिर से डिस्कस करूँ। ओके, नेक्स्ट, ये बहुत स्पेशल है। दिस इज द चार्ट ऑफ मिस्टर विजय चुआर। So he had actually many questions. So regarding his big events of his life, starting from his father's sudden death in 2016, problem with PhD supervisor. He was getting a fellowship in PhD, but discontinued from January 2020. And I have explained. I'll explain why. It's Cancer, Mahadasha and Scorpio under Dasha, and transit of Saturn both. I'll explain. I'll try to explain. Now, I have mentioned here, point to be noted, he is actually born in Nagpur and staying in Nagpur itself, and his Jupiter is retrograded, and I have already mentioned that what do you need to do for retrograde Jupiter. Okay, now as you can see, uh, I have not explained it because I cannot right now because of so many questions I have. So I have noted down few dashas. It would be JCD, okay, not Vimshottari dasha. It's a different kind of dasha. I'll discuss it. I'll try to explain, which is Jaimini Chara dasha. And according to that, this problem, whatever problem you have been facing till since January 2020, it will continue till at least 24th of November 2020. So I do not know, I'll be able to publish this video before that, but note down the time, 24th of November 2020. It will continue till that date. After that, I have seen that the position would change. Okay, and you might get some relief. But overall, if I say it's a Saturn transit, if you check the transit of Saturn, Saturn is now in Capricorn from January 24, and as I say always, planet speaks. Now, once Saturn entered, it actually affected your profession directly and your PhD, and because it is aspecting Mars, and Mars is also aspecting Saturn from 8th house, transiting Saturn. Okay, so it indicates that there will be trouble in this overall 2.5 years till 2023, but there would be a relief after 24th of November, but I cannot guarantee that there will be no trouble till 2023. It would be okay, ups and downs would be there till 2023. After that, things will change, especially after 2022. From 2023, I think your time will change completely, and it would be for good. Okay, so now I'll try to explain something. He got married in 2014 while Jupiter was in 7th house of marriage,
and aspecting Venus. You check it on your horoscope, okay, and I have checked this in your birth chart itself. Now I have to check his D24 chart of Chaturtha Vimshamsha for his education. Now I can see that Mercury, which is the Lagna Lord in D24, sitting on Lagna, which is actually good and showing that he wants to learn more. Okay. Now I have to check the fifth house. Who is the fifth house lord? Fifth house lord is Venus, Libra. Okay. Venus is sitting in Aries and with Jupiter. Now this is not a very good position of Venus. First of all, Venus is with enemy, and again it's in the house of another enemy, which actually indicates that there would be struggle. But one thing is for sure, you'd be able to complete your PhD. Okay. Now let me answer the question that why there is so much of problem. Okay, with your teacher. First of all, Mars creates some problem, okay, and Venus, which is the fifth house lord in this case, is sitting on the house of Mars only, with another guru, which is Jupiter, and Jupiter is retrograde here. So Jupiter, Venus, both are gurus. So I do not know the situation you haven't explained, but I think there would be some ego clashes, and I think there would be some involvement of uh, a lady or more than one lady. So it can be the wife of your teacher. So I do not know. Even you may not know also, but I think that might be the case. Okay. Regarding your father's death, I'd like to say one thing, that if you see Saturn's transit on that position, on that time, I'd like to explain. See the birth chart. You said your father expired in 2016. So I guess at that time Saturn was in number 8. That means your 12th house is Scorpio. Okay. So Saturn was transiting over Sun or near Sun. So Sun is the father. Okay. Father indicator in Nadi astrology. Number 1. Also, if Saturn was in Scorpio, you see it was aspecting Moon directly. Okay, who is the Moon? Moon actually is the killer of at the if we consider Moon as a killer of your father in this case. Why? Here, if you see the ninth house is Leo. Now 12th from ninth is the 8th house. Okay, so 8th house lord, who is the 8th house lord? In this case 8th house lord is Moon. So Saturn, who is the god of death, touches Sun, aspects Moon. It creates the clear connection, okay, of the regarding the expiry of your father. So my condolences. And why this sudden death? To answer this, here if you see Mars is sitting on the 8th house, okay, and Sun is sitting in the house of Mars. So this is clearly Sun, who is Sun, it's actually your ninth house lord and a father indicator, both confirms. Okay, and Mars is sitting on the 8th house, who is representing that particular house where your where the Sun is sitting. Okay, so it represents sudden death. Okay, so I was just trying to explain. Now for your career, Dashamsa. Okay, so D10 chart we have to see. First of all, in Dashamsa Lagna Lord, I can see it's in 5th house, so which is actually great. Now
Okay, Mars is in the house of Sun, and Sun is in the house of Venus. Okay, fine. So Mercury is sitting on the Lagna and Jupiter is retrograded. Okay, Jupiter is retrograded basically just after Mars. Fine. So career is overall good. I would suggest that you try to do something related to government. Okay, and you might get success in that. Uh, Okay, and you know the suggestions. I would not say that. Yes, I have already mentioned this. Reason for recent change. So, as I said, basically, if you see Saturn's transit, you'll get your answer. And you see Saturn is on your second house, aspecting the eighth house, and fourth house is getting so your family is also getting impacted because I do not know. You said you were a teacher. You have been teaching since long, but my suggestion would be try to give your knowledge for free, at least for few students. So that would do good for you in return. Okay, that is my suggestion. Next question is from Shailendranath Biswas on job timing of Sun. Okay, he has provided his Sun's birth chart. Okay, so basically, what I can see that the timing of job has already been started from 24th of January 2020. If you want the explanation, you can see the video of job timing. It's been available in the playlist of Hindi and English. Maybe I'll try to list it in Bengali also. Uh, in short, I'll explain that Saturn is on Makar Rashi or Capricorn and aspecting the 10th house and 10th lord both, which is actually Venus sitting on the third house. Okay, so yeah, that's a very good time, and within this 2023, I think it would be very soon. It would not take 2000, till 2023. I think in this year or the coming year, depending on the transit and dasha, I have to check in detail. But I didn't get enough time because I have to explain many horoscopes here. I have to answer. Overall, uh, this is my answer. In this period only, I do not know whether your son already got a job or not, but it is possible he has already got it or he has given some interviews and he would be getting it very soon. And overall, your son is very intelligent, and I can see that there would be no, problem of money. So it's a very strong chart monetary wise. Okay. Kaushik Malik asked me about foreign settlement and also asked me regarding some gemstones. But Kaushik, I do not suggest gemstones. First of all, at least on YouTube, I would not say anything. But regarding your foreign settlement, I would say that you will definitely settle in a foreign country and you have a very special chart. Why I'm saying this, I have actually noticed a few points. As you can see, your Lagna Lord is in the 12th house and it is a retrograde Jupiter again. Okay, so you can see why I'm saying this. Okay, now you will be very successful. I do not know what you actually do. You say you are staying in US, but I think you have a very strong chart. Why? In Dashamsha, I can see that 10th house Lord is Saturn, which is in the ninth house of uh, long distance, and uh, the Lagna Lord itself actually sitting on the 10th house and exalted Mars. Okay, so career wise, it would be very good. I do not know what you actually do,
but I would not be surprised if you come and say that you have some talent like uh, on sports or something else. Maybe you have some skills which you have not mentioned to me, and you have keen interest in astrology itself. Okay. Jupiter is retrograded, Saturn is retrograded, Mercury is retrograded in Dashamsha also. So it is a very strong chart and indicating something big. And yeah, Venus is debilitated. Venus is the second lord and second and seventh lord. Okay, so I can say that sometime you might have faced some issues regarding money flow. Okay, but overall it's a very good chart. Okay, and you will achieve a great success. And in D9, if I see, I have checked that the Lagna Lord is sitting in the third house with Rahu. Rahu is the indicator of foreign. Okay, so I really do not think that you need a gemstone for that. So you get a foreign settlement for sure. Nobody can stop you. Next, it's a question regarding career by Mr. Aryan Mittal. Okay, so I have to check his birth chart. First of all, you do not have any issues regarding money. Okay, and so here for profession we can see 10th lord and Saturn. 10th lord is Sun. Sun is sitting on the Lagna itself, and Saturn is retrograded in 9th house and aspected by uh, okay, very good. So there is an exchange between 3rd and 9th. Okay, so I think it shows a very good career. And regarding 3rd and 9th connection and 10th lord in Lagna, I do not know what you do. Maybe maybe you can continue with your dad's profession also. Okay, so uh, may this responsibility may come to you, or you will do uh, same nature of work what your dad used to do. Okay, that that is the only thing I can say, but there are many things which we need to see for that. Otherwise, we should not mention it. Again, Lagna Lord in 12th house, so with Ketu, it indicates you have to control. Okay, so maybe you get angry or you might be short tempered. Okay, otherwise, it's a good chart, strong chart. Money flow wise, there would be no issues. And in your D9 also, if I see Lagna Lord in 7th, which is again confirms that you may go to foreign country or do something related to foreign. And in Navamsha, 10th Lord is exalted in 7th house again. So there would be a very good chance that you may go to a foreign country or do something related to foreign. In Dashamsha or D10 also, I can see that the Lagna Lord is sitting in the third house, uh, and there is an exchange between 7th and 10th house. Again, I can confirm that you may go to foreign country and you will settle there, or you will do something related to foreign, because in Dashamsha also there are two connections. If you see 7th house lord in 10th house, 10th house lord in 7th house, and Rahu is in 12th house. So it's a very good chart for foreign settlement also. So I've came to the final horoscope of Nidhi Tiku, who asked me about marriage timing. So what I have seen that right now transiting Jupiter is in Capricorn. Okay, but Nidhi, you get married after 2021 April. Okay,
you write down a date which is 6th April of 6 which is 6th of April 2021, from 6th of April 2021 till April 2022 or so. Okay, within this particular 1 year you'll get married. Okay, so that would be the marriage time. Maybe you have met someone already on this particular year. I think from March 2020, there is a chance that you have already met someone, and I do not know, it can happen. Okay, and you will get settled with that person in between 2021 to 22, whatever time I have mentioned already. And if you have not met yet, it is possible that you will be meeting the person very soon. And note down the timing, which is April 2021 till April 2022. This is the 1 year period you would get married. Okay, so I have explained your horoscopes. uh, so I think I have given all the answers what I promised. So guys, I have listed some videos. My upcoming videos would be on mystery of Ketu, how to determine profession, profession of spouse, sannyas yoga or moksha yoga, nature of spouse, how to predict through Gemini Charadasha, how to determine challenges of life, how to predict through Yogini Dasha, different kind of lagnas and their uses, horoscope. Basically, it's actually different kind of Varga charts. Okay, and next is horoscope discussion of Sri Ramakrishna Paramahamsa and Mata Sarda Devi. So these are some of the points which I'll discuss in my next videos. Okay, so guys, please do subscribe to my channel, and if you like my videos, please put a like and stay tuned. Thank you so much for watching. Take care. Bye.